शांति। सभी अपने प्यारे ते प्यारे बाबा के घर में अर्थात अपने घर में पहुंच गए। All of you have reached God's home, Baba's home, which means your own home. ऐसे समझ में आता है कि हम अपने स्थान पर पहुंचे हैं। Do all of you feel that you have reached your own home? Yes? मेहमान समझते हो या अपना घर समझ के? Do you consider yourselves to be guests here, or do you feel that you are in your own home? क्योंकि ये जो घर है ये किसी के नाम से नहीं है, ये शिव बाबा का ही घर है। Because this place is not under anyone's name, any human being's name. It is Shiv Baba's home, God's home. और शिव बाबा यानी परमात्मा जो है उसको तो सभी अपना फादर मानते ही है। And God's home is supposed to be our home because God is considered to be our father, is it not? तो किसका घर हुआ? So whose home is it? आप गॉड के बच्चे हैं तो अपना घर हुआ ना। As you are God's children, this is your home, is it not? तो हमें भी बहुत खुशी है कि आप सभी परिचय मिलते ही अपने घर में पहुंच गए हो, अपने परिवार में पहुंच गए। So I'm very happy to know that you got the introduction of this place and you then came here, you came to your own home, you have come to your own family. ऐसे है? ओके? हाँ, ओके? Okay, then raise your hand. ओके। आप सारे दिन में जो इंग्लिश बोलते हैं वो सारे दिन में ओके शब्द कितने बारी बोलते हो? You know, when you speak in English, we often say okay, okay too. So how many times do you say okay, okay? How many times? बहुत बारी बोलते हो। तो हमको शिव बाबा ने ओके का बहुत बढ़िया अर्थ बताया है। So, you know, when we say okay, Baba, Shiv Baba has told us a very wonderful meaning of this word okay, the alphabet O and K. तो ओ देखो शिव बाबा जैसा शेप होता है ओ का। So O is round, no? So we say Shiv Baba is round. और के किंगडम। So O stands for God and K stands for the kingdom, the golden aged kingdom, the kingdom of Satyug. So God and the kingdom. तो शिव बाबा कहता है जब भी आप ओके कहो ना तो ऐसे ही ओके नहीं कहना, अर्थ याद करना। ओके कहने से शिव बाबा भी और अपनी किंगडम दोनों याद आनी चाहिए। So when you say okay next time, just don't say okay, you know, but say it with a meaning. O means, which stands for Shiv Baba, God, like zero is God, the supreme being, and K means the kingdom, the inheritance which God gives us of golden age. तो कितने बारी याद आएगा शिव बाबा? बहुत बारी याद So how आएगा many ना? times will you be able to remember Shiv Baba when you say okay? तो सभी का बहुत बड़ा भाग्य है जो आप इस धरनी पर बाबा के धरनी में पहुंच गए हो। All of you are very, very fortunate indeed to have reached God's home, Baba's home, this land of God. तो हमेश जब भी गॉड कहो ना तो सिर्फ गॉड नहीं कहना, लेकिन हमारा पिता है। रिलेशन से
परमात्मा को याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी याद आएंगे. So whenever you say God, just don't say God, I mean, without any other thoughts, but have the thought that I am related to the Supreme Being. So when there's relationship, then the mind goes there very easily. आप देखो, आपको सारे दिन में जिससे भी बहुत प्यार का रिलेशन होगा ना, वो याद बार बार आएगा. You'll notice during the whole day also, if there is a loving relationship with anyone, you will be able to remember that one very easily, and many, many times you'll remember that person. तो सिर्फ भगवान नहीं, लेकिन मेरा क्या लगता है. So when you say God, just don't say God without any other thought, but have the thought, in what way am I related to God? और एक तो संबंध से याद आता है, और दूसरा कोई प्राप्ति होती है ना जिससे भी, तो याद आता है. So one is relationship will pulls the mind, and the other is some attainment. If I have got some attainment from someone, the mind will be pulled there. तो परमात्मा यानी गॉड से हमको क्या मिलता है. So what do I attain from God? जो हमको जीवन में चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो वो सब परमात्मा पिता द्वारा हमको प्राप्ति होती. So what do we need in life? We need happiness, we need love, we need peace. So we can get all that from God because He is the imperishable bestower of all these qualities. कई भाई बहन कहते हैं ना, हम शिव बाबा को, परमात्मा को याद करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है, याद नहीं आती है. Many people say we want to remember God, but then the mind is not able to concentrate on Him. क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप रिलेशन से याद नहीं करते हो उसको. So why is the mind not able to go to God? Because the mind doesn't remember the Supreme with some relationship. और गॉड से तो हमारे सब संबंध है. एक ही परमात्मा है जिससे सर्व संबंध हो सकता है, और कोई भी मनुष्य आत्मा से सर्व संबंध नहीं होता है. Actually, it's only one God with whom I can have all relationships. With no any human being or no one else can ever have all relationships. तो इसीलिए यहाँ आप जो मेडिटेशन सीख रहे हो ना, उसका तरीका ही ये है कि परमात्मा को संबंध से याद करो. और मेरा है, सारे दिन में आप देखो, मेरा मेरा ही तो याद आता है ना, तेरा नहीं याद आएगा. So मेरा याद आता है. the meditation which we learn here is based on our relationship with God. I belong to Him, He belongs to me. This is something very common, you know. When you think of someone to whom you belong or which that belongs to you, you remember that one so easily. And you have the habit of saying, this is mine, all the time you say, this is mine. So you have this habit already of saying mine. तो गॉड किसका है? So to whom does God belong? हरे क्या कहेगा? मेरा है, मेरा You will say He's mine. है. आपका है? Will you say is yours? Yes. मेरा या ब्रह्मा कुमारियों का? Or is Shiv Baba only of the Brahma Kumaris also, or does he belong to you also? Does he belong to you? Yes? Yes. मेरा बस. कभी भी कुछ भी हो जाए ना, बस दिल में याद करो मेरा बाबा, तो बस आपको जो भी समस्या है वो हल हो जाए. So if anything happens, any obstacle comes, any problem arises, or any difficulty comes, anything which comes in your way, which creates an obstruction, which may give you sorrow, at that time just say, my Baba, and immediately how Baba will come to your help. क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है,
अर्जुन को क्या कहा, हे अर्जुन मैं तुम्हारा हूँ, तेरा हूँ। तो हम सब अर्जुन है और हम सब के लिए ही बाबा है। तो जितना मेरापन लाएंगे ना शिव बाबा में, उतना आपको याद बिल्कुल सहज आएंगी, मेहनत नहीं लगी। So in the Gita also it is that God is telling Arjuna, I belong to you. So similarly, when I say God belongs to me, then it's so easy to remember the Supreme Being because He belongs to me. तो यहाँ मेरा बाबा याद करके जाना, मेरा गॉड, हाँ मेरे लिए आया है, मेरा है, ये याद करके जाएंगे ना तो मेडिटेशन बहुत इजी हो जाएंगे। So if you think in this way, my Baba, I belong to God and God belongs to me, and you say Baba, then meditation will become very easy. तो क्या कहेंगे, माय बाबा, हाँ Will you say my Baba? Say all of you. माय, Baba. हाँ माय बाबा, यूर नहीं माय। क्योंकि हम देखें तो एक ही भगवान है जिसके लिए सभी कहते हैं हमारा पिता है, चाहे किसी भी धर्म वाला है, लेकिन गॉड इज वन सभी बोलते हैं, गॉड इज ट्रू किसने नहीं बोला है। Actually, God is everyone's, and therefore everyone can say my God or my Baba or my, they all say, all religions also, in every religion they'll say God belongs to them. So all of us can say my Baba or my God. इसीलिए यहाँ आपको मेडिटेशन जो है ना, वो बहुत सहज रीति से सिखाई जाती है। Therefore, वो meditation अभ्यास is taught करते in a very रहना। easy way here, and you need to practice that. बाकी तो आप आए हैं तो शिव बाबा कहते हैं कि सदा अपने जीवन में कभी भी खुशी नहीं गमाना। So that was one point. Now Dadi is moving on to another point in which she is saying, never, never lose your happiness, come what may. Few minutes silence. तो हम सुना रही थी, तो शिव बाबा हमको यही शिक्षा देते हैं, तो जीवन में सदा खुश रहना है, अपनी खुशी नहीं गंवानी है, क्योंकि खुशी जो है वो हमको परमात्मा की प्राप्ति है। तो परमात्मा की दी हुई चीज़ खुशी वो हमारे जीवन से जाए क्यों? So Shiv Baba gives us the teaching that never, never lose your happiness, come what may. Happiness is a godly gift to us, given to us by God Himself. So why should we lose happiness? और खुशी जाती क्यों है? देखो, कोई भी जीवन में छोटी मोटी बातें आएंगी ना, तो बात आई ऊपर से, बाहर से बात आई और हमारी खुशी लेके जाती। क्यों? You know how happiness is lost? Some situation comes, that situation which comes, it comes in external way. And that situation goes after some time, but it takes away our happiness too with it. Why does it take away our happiness? जैसे कोई भी आवे हमारे पास, हमारी चीज ले जावे तो आप लेने देंगे? Just as if somebody comes to you and just takes away something which belongs to you, will you allow him to take it away from you? Will you? तो हमारी खुशी बात क्यों ले जावे? So why should that situation take away my happiness? क्योंकि बात ठहरती नहीं है।
बात आती है और चली जाती है। Actually, the situation which comes doesn't stay long, it goes away very quickly. लेकिन हम बात को पकड़ के बैठते हैं ना, ये क्यों कहा, ये क्या कहा, ये कौन है, ये हम बात को पकड़ के बैठते, इसीलिए हमारी खुशी गायब हो So जाती। that incident which happens goes away very quickly, but then we catch hold of that situation by asking questions. Why this happened? That should not have happened. If this wouldn't have happened, then that wouldn't have happened. So these thoughts take away my happiness. इसीलिए शिव बाबा का स्लोगन है कि सदा खुश रहना और खुशी बांटो, औरों को भी खुशी बांटो। Therefore, Shiv Baba always tells us, it's like a slogan which he gives to us, be happy and make others happy. Share happiness with others. Keep on giving away happiness to others. क्योंकि आप समझो खुश है तो कोई भी आपके सामने आएंगे तो वो कैसे भी रूप में आएगा, लेकिन आपको खुश देख करके वो भी खुश हो जाएगा। तो बांटी ना अपने खुशी, तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। So how can you share happiness? Now if you are happy and someone comes in front of you and is not happy, but the moment he sees you happy, smiling and are happy, then that one also begins to get happy and starts smiling. तो आप सदा खुश रहना और खुशी बांटना। So always be happy and keep on sharing happiness. खुश रहेंगे? Will you be always happy? हाँ, हैप्पी। खुशी कभी नहीं गमाना। Never lose your happiness, come what may. बात को चला लेना, लेकिन खुशी को नहीं गमाना। Because the situation will go, the incident will go, but never, never lose your happiness for that. और खुशी जाने क्या, ये दो शब्द ही होता है, क्यों और क्या। So why do we lose our happiness? Because two questions come in our mind. Why this happened? What happened? Or how it happened? So these questions which come in our mind, they take away our happiness. तो जब भी वाय आवे ना, तो आप वाय के बजाय फ्लाई कर लेना। So whenever the word why comes, instead of that, just change that why into fly. फ्लाई करेंगे? Yes, will you fly? Just go beyond. क्यों? कि आप सभी आत्मा हो ना, तो आत्मा तो उड़ता पंछी है। Because you are a soul and the soul is like a flying bird. तो जब कोई भी बात आवे, अपने को आत्मा समझने से वाय खत्म हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा, और जो भी बातें होंगी ना, आप फ्लाई करेंगे तो बात नीचे रह जाएंगी, So when आपको तंग नहीं करेंगी। So when anything happens and you tell yourself, I am a soul, then you will just go beyond, you will rise higher. And that situation is low, it will always remain down. And as you go higher and that thing remains down, it won't come in your way. अभी जैसे आप खुश है ना, यहाँ खुशी है। Here, are you happy? Yes? Are you happy here? यहाँ भी खुशी जाती है? Here, do you lose your happiness? No? नो? कोई टेलीग्राम आ जाए, खुशी जाएगी? Supposing you receive any message from home, something has happened, will you lose your happiness? No? नो, क्योंकि यहाँ खुशी का वायुमंडल है। तो यहाँ जैसे खुश रहते हो ना, तो वहाँ भी जाके अगर आप अपने को आत्मा समझेंगे ना, मैं आत्मा हूँ, शरीर जो है वो मेरा है और मैं इस मेरा कहने वाली आत्मा हूँ, तो आत्मा सदा खुश रहेगी। So here you won't lose your happiness because it's an atmosphere of happiness here. And therefore even if something happens, you'll still be in peace and happiness. So even when you go back home, you should not lose your happiness because you are a soul and you are in this body. But in a moment, in a second, you can just go beyond the consciousness of the body. And therefore that awareness of the soul will help you to enable you to become happy.
तो सारे दिन में आप देखो मैं और मेरा कितने बारी कहते हो. During the whole day, how many times you say I and mine? तो आए क्या और माए क्या. So what is I and what is mine? शरीर के लिए कभी नहीं कहेंगे मैं, शरीर के लिए मेरा कहा जाता है. मेरा मन आज अशांत है, मैं मन अशांत कभी नहीं कहेंगे. So for the body or for anything else, always you say my, you won't say I. Even for your mind, you will say my mind is not happy today. My mind is not peaceful today. तो मेरा शरीर है और मैं, जैसे मैं कहती हूँ ये मेरा रुमाल है, मैं रुमाल नहीं कहूँगी, मेरा रुमाल है. और मेरा क्यों कहा, क्योंकि मैं इसकी मालिक हूँ. So your belongings are yours and you will say this is mine, like this is my handkerchief because it belongs to me. So whatever is mine, I'll say this belongs to me, but it's not I. I am different from it. तो कौन हो आप? Who are all of you? आत्मा या बॉडी? Who are you, soul or body? Atma. आत्मा. पक्का. दो बात पक्की करना. एक मैं आत्मा हूँ, दूसरा मेरा बाबा है. So remember, मेरा बाबा है, मेरा सर्व संबंध है, रिलेशन है बाबा से. so remember I and mine. So I am a soul and mine is Baba. All my relationships are with Baba. दो बातें ही पक्का, आत्मा परमात्मा. So remember these two things, Atma and Paramatma. I am a soul and mine is Baba. हाँ बस. तो कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा. That you'll never become unhappy in life. क्योंकि जब हम अपने को आत्मा भूलते हैं ना, शरीर भान में आते हैं, तो शरीर भान में आने से ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार प्रवेश हो जाते. So unhappiness comes because of the 5 vices, and the vices are because of body consciousness. So when one is body conscious, the 5 vices enter: sex, lust, anger, greed, attachment, ego. आप देखो कभी भी आपके जीवन में दुख आता है या अशांति आती है, तो कारण कोई ना कोई विकार होगा, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो. You must have noticed in your life too, if there is any sorrow, it is because of some vice. And that vice is because of body consciousness. So if there is sorrow, it means it's either sex lust or anger or greed or attachment or ego. Any of these vices will lead to sorrow. तो इन 5 बॉडी कॉन्शियस के कारण विकार आता है और विकारों के कारण दुख अशांति होती है. तो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दो तो विकार नहीं आएंगे, अशांति, दुख जो है वो समाप्त हो Body consciousness leads to the vices, and these vices lead to peacelessness and sorrow. So finish body consciousness, then the vices will go and the sorrow and unhappiness or peacelessness will also go. आप सभी को क्रोध आता है? क्रोध का अनुभव है? Do all of you get angry? Do you have the experience of anger? कोई ऐसा है यहाँ जिसको क्रोध का अनुभव ही नहीं Is हो? there anyone who never gets angry? Never, never, whatever may happen, never any anger? Anyone raise your hand? है कोई? प्राइज देंगे उसको. You'll be given a prize if you don't get angry. हाँ? क्रोध नहीं आता. Kabhi nahi, never get angry. क्रोध देखा है? Have you seen other people getting angry? Never seen anybody else getting angry also. क्या कहते हैं? Never seen anybody else getting angry with you? कभी कोई को क्रोध करते देखा है? Have you seen others getting angry? Other people getting angry? तो पता तो है ना क्रोध So you क्या know होता what है. it is to get angry, no? खुद को नहीं आता है, मुबारक हो. You may not be getting angry. Congratulations if you don't get angry. वेरी गुड. तो देखो सारी सभा में से एक
So there are 1800, nearly 2000 people sitting here. Only one person has claimed that he doesn't get angry. तो क्रोध क्या होता है? क्रोध जिस समय भी आता है तो सभी को अनुभव है कि क्रोध एक अग्नि के रूप में आता है. So all of you have the experience of anger. Maybe you don't get angry, but you see others getting angry with you or other people getting angry at each other. What is the result of that anger? You see, it's like a fire which देखो ना, people जब burn and क्रोध burn others. क्रोध आता है तो फेस क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है फेस. How does the face become when one is angry? It becomes red, no? Like copper. और गर्मी लगती है ना अंदर. And you start feeling hot inside because you got angry. कहते हैं जिस समय क्रोध आता है ना, कहते हैं ठंडा पंखे के नीचे ठंडी हवा में बिठाओ, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ. When someone is angry, they are told, sit under the fan and drink cold water, then the anger will go. और क्रोध होता किससे है? जीभ से. और जीभ कितनी छोटी है? मनुष्य 6 फुट का है और जीभ 2.5 इंच की है. लेकिन 2.5 इंच के जीभ के ऊपर 6 फुट 5 फुट मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं. See, anger comes through the mouth, no? The tongue. You speak with anger. And this anger, this tongue is only 2.5 inches. And the human being may be 6 feet tall or 5 feet tall, whatever. But that 5 feet, 6 feet tall person is under the influence of the tongue. The tongue is more stronger than that 6 feet person. तो क्यों कारण? क्योंकि अपने को आत्मा भूल गए. Why it happens? मैं Because मालिक हूँ आत्मा, ये भूल गए. we forget that I am the soul and I am the master of these sense organs. तो अभी यहाँ से मास्टर बन के जाना. So here you become a master. Go back as a master of the physical senses. तो फिर आपको कभी भी दुख अशांति नहीं है. Then you will never become unhappy or peaceless. तो ये भूलना नहीं. 2 शब्द हमने बार बार याद कराए हैं. 2 शब्द कौन से? मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा हमारा सब कुछ है. So remember 2 words, I and mine. I am a soul and Shiv Baba is mine. Shiv Baba is everything to me. तो खुश रहेंगे. Will you be happy? Yes? खुशी नहीं गंवाना. Never lose your happiness. हाँ, खुश रहना और खुशी बांटना. और कुछ भी नहीं कर सको ना, जो भी आपके पास आवे ना, मुस्कुरा के मिलना. So let anything happen. Never lose your happiness. Be happy and keep smiling at anybody who comes to you. Dadi ji has come. Dadi Prakash Mani is here. Dadi ji will give drishti to everyone. So no need to wave to Dadi. I mean, no, it's okay, but just keep your hand down and Dadi will give drishti. Don't take photographs, please. Just take drishti from Dadi. मैं ट्रांसलेट करूंगी दादी. आप जो बोलेंगे ना मैं इंग्लिश में बोलूंगी. आप सभी यहाँ अपने तमिलनाडु आदि के तरफ से
आराम से पहुंच गए और आराम से रहने का सबको इंतज़ाम मिला होगा, तो पहले दादी ये पूछती, सभी आराम से Daddy came पहुंच to know गए? that you have come from so far, you know, Kerala, Tamil Nadu also, and you have reached here from so far. Are all of you comfortable wherever you're accommodated? Daddies are like a mother, you know, she asks the children. दूसरा, आप सब ये न्यू एजुकेशन कहो अथवा ये गार्ली नॉलेज, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में समझने और शुरू करने निमित्त पहुँचे हो। Please, all those who are taking photographs, I think just wait for some time. Dadi will be speaking for a long time. You can take later on, not so many together. Please sit down because it's distracting, please. Dadiji is saying that you have come to this spiritual university to study spiritual knowledge here. So are you studying spiritual knowledge well? You are paying attention? Everyone's a good student? Yes? आप वैसे अपने अपने देश में अनेक साइंस आदि के कोर्स उठाते हो, परंतु कहाँ भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में साइलेंस इज गोल्ड ये लेसन किसने नहीं पढ़ाया। In other universities, you learn so many subjects and you're going to the depth of each subject. But no one really teaches us how to be silent, how to be peaceful, how to go inwards, to go within. These things are never taught anywhere. अथवा अनेक सब्जेक्ट्स पढ़ी, पर ये एक सब्जेक्ट कि आप ये शरीर नहीं हो परंतु चैतन्य शांत आत्मा हो, ये लेसन किसने नहीं पढ़ाया। Also, no one ever teaches us that you are a soul. Never, never anybody has ever said to us like that before. तो आप सब यहाँ ये पढ़ने आए हो कि कैसे इस लाइफ में प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी लियो तो पीस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी सुख Here you are आनंद होगा। also told that these three things are important: purity, peace and prosperity. Peace and prosperity will come only if there is purity. Without purity of the soul, purity of the mind, peace and prosperity will never be experienced. उसके लिए दादी आज आप सबको 3-4 बातें कहेंगी। And therefore, Dadiji is going to tell you 3-4 things today for experiencing purity, peace and happiness in life. पहले तो दादी द्वारा आप अभी बहुत सुना। दादी ने बताया सदा खुश कैसे रहें। अच्छा, एवर हैप्पी। तो दादी उसके आगे कहती है, पहले तो ये लेसन पक्का करो कि हम देह नहीं पर हम चैतन्य आत्मा है, जो आत्मा प्रेम, शांति, आनंद का स्वरूप है। So the first and the foremost important lesson which everyone has to learn very well, that I am a soul, but not just that I'm a soul, but I'm a peaceful soul, I'm a loving soul, I'm a pure soul. That consciousness should be there all the time.
दादी क्या सुनाया? दादी ने बताया कैसे सदा खुश रहें, वाई, ये मत प्रश्न नहीं पूछो, बात तो चली अच्छा। जाएगी. Dadi ji is asking, what did Dadi Hirday Mohini say before I came? So तो I'm उस telling her. सदा खुश रहने की सदा एक प्रोग्राम अपने पास में नोट करो. So in order to be happy, remember one thing first of all. Note down with you what you have to remember. पहले तो सवेरे सवेरे ये लेसन पक्का करो जो यहाँ भी आपको 3 दिन में बताया जाएगा कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन. So the first lesson which you must learn very, very well, who am I? Who am I? तो मैं जो शरीर हूँ, मैं फलानी माँ हूँ, बेटी हूँ, बेटा हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, ये मैं के बदली मैं आत्मा शिव परमात्मा की संतान हूँ. So instead of saying I'm a mother, I'm a father, I'm a husband, I'm this, I'm that, just remember I'm a soul, and I'm a child of God, I'm a child of Shiva, I'm the child of the Supreme Being. Remember that. तो सवेरे ये अभ्यास हो कि हम देह नहीं पर आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा. So the first thing, the moment you wake up, you open your eyes, at that time the very first thought should be, I'm a soul, I'm a soul, I'm a soul. तो जब कोई आपस में भी मिलो या परिवार से भी सुबह को उठे, आप लोग गुड मॉर्निंग करते, अच्छा है, परंतु उनसे पहले ये कोई भी संबंधी उठते ही बोलो ओम शांति, ओम शांति. So the next thing you do is when after you wake up, you meet somebody and you say good morning or whatever you say. So you can say instead Om Shanti to anyone you meet first. उसके लिए कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट ओम शांति करके शांति के सागर शिव बाबा को याद करो. And then you sit in the remembrance of the ocean of peace, ocean of knowledge, Shiv Baba for a few minutes early in the morning. फिर बाद में अपना कार्यक्रम करो और टाइम मिले तो आश्रम पर जाओ, घंटा आध ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो. And then you may become busy in your activities, and if you have time in the early morning hours, then you should go to the center to learn more about this and also do some meditation in the center. दूसरा, यहाँ ये लेसन पक्का करो कि हमें आपस में परिवार में भी शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, आपस में भी कभी भी वैर विरोध गुस्सा नहीं करेंगे. And also whenever you meet anyone, you will see that one as a soul, and your interactions should be very loving, very peaceful. Don't get angry with anyone, don't have a hatred for anyone, but you should have love for everyone and be in peace with everyone. इसलिए पहले अपनी स्व से प्रवृत्ति बहुत बहुत खुशी और शांति से शुरू करो. So right from the beginning, you start off with the very first thought, who am I? And I'm a peaceful soul, I'm a happy soul. So that consciousness you start off with, and then you move along in the day. आँख खोलते
सुप्रीम फादर शिव बाबा को पहले याद करो. And as you open your eyes, the first thought about the self and the second thought about the Supreme Father, your mind's eyes should look at Baba only and no one else. फिर परिवार में भी एक दो को याद कराओ, ओम शांति शिव बाबा, ओम शांति. And then in your family to remind your other family members, say Om Shanti to them and tell them also to remember Shiv Baba. माँ का काम है बच्चों को भी सिखाना, बाप का भी काम है माँ बच्चों को ऐसा सिखाओ जो उठते ही शांति का, प्रेम का, खुशी का व्यवहार करे. It's the duty of the mother and father, your responsibility of the parents to teach the same thing to the children as well. That when they get up, wake up, the first thing they should say, I'm a soul, then say Om Shanti, see each one as a soul and be loving to everyone. So the parents should teach this to the children too. दूसरा, दादी की शुभ राय है कि पहले खुद से पक्का करो, फिर भले परिवारों से, कि हम आज के दिन से आपस में बहुत बहुत शांति प्रेम से रहेंगे. So first of all, tell to yourself, I will always stay peaceful, I will always be peaceful. And then you have to be peaceful with others also, with whomever you meet, whomever you come in contact with. कईयों की आदत होती उठते ही थोड़ी 2 मिनट चाय दूध लेट मिली तो उठाया एक दूसरे को गुस्सा करना शुरू करेंगे. There are many, the moment they get up, they wake up, they start getting angry because they woke up and they didn't get something, they didn't get their tea, they didn't get their bed tea, then they start getting angry. So right from the beginning, the morning itself, they've got angry. So the whole day they remain angry because the first thought leads to the last thought too. तो उससे तो बेहतर है आके शांति से प्रेम से बैठो, बाबा को, शिव बाबा को याद करो, आप ही टाइम पर आपको घर से जो भी दूध चाय काफ़ी आज मिलनी होगी मिलेंगी. So the first thing is, the moment you wake up, don't remember any physical things. Don't remember, oh, I need tea, I need coffee, I need milk, I need this. No, these are all physical things. The first thing is, I'm a soul, I'm the child of Shiv Baba. That should be the first thought before anything else of this world. बच्चों को भी सिखा दो कि चाय से पहले 1 मिनट भी शिव बाबा को याद करो. So little children also should be taught this, how to sit in meditation, how to think I'm a soul, how to remember Shiv Baba. So little children also can be taught this. They will do it very well if you teach them. दूसरी दादी 2 बातें कहेंगी, कहूँ Now जो मुझे कहनी हो कहूँ. should daddy tell more? What else you should do? Should she tell you? You won't mind it? No? Should she tell you? Will you do it? Yes? Okay. तो आप लोग पहले तो यहाँ आए हो राजयोग सीखने, तो सवेरे उठते ही और दिन में भी ये स्मृति रखो कि हम वास्तव में सच्चे सच्चे शिव बाबा के बच्चे राजयोगी है. So the first thing in the morning, what you're supposed to do, Daddy already told you. Now after this, during the day too, do not forget who you are. It's not that you should forget during the day, during other activities. Always think, I'm a Raj Yogi. I'm a child of God, I'm a Raj Yogi, and therefore I cannot forget the Supreme Being because I'm always connected with the Supreme Being.
दुकानों पर या दफ्तरों में भी एक आधा मिनट भी भले नहीं, आधा मिनट साइलेंस कर शिव बाबा को याद करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद। Whenever you start any task, any work you do, before you do that work or start that work, become aware that I am a soul. You are going to your shop, you open your shop, at that time think, I am a soul and I am the child of Shiv Baba. And then you start doing anything. So any work you do, before that have that thought and then do that work. दूसरा, ये भी पक्का आज करो कि हम राजयोगी माना शांति प्रेम से व्यवहार करना, गुस्सा नहीं करना। And then with whomever you come in contact with, whether your customers, your other friends, colleagues, relatives, anyone, you must keep in mind that never to get angry with anyone. What come what may. Never burst away, never burst out or get angry. तो पहले आप स्वयं में संकल्प करो कि हम यहाँ प्रेम शांति सीख जाते, हम शिव बाबा को गुस्सा, थोड़ा भी जो गुस्सा होवे वो दान करके जाते। So Daddy wants you to surrender, to sacrifice anger. Will you be able to sacrifice anger? Can you say swaha to anger and you sacrifice in this sacrificial fire? This whole hall like a sacrificial fire and you say swaha to anger. Can you do it? Those who say, those तो who want हाथ to... उठाओ, Yes. शिव बाबा ये गुस्सा दान Anger करते, हाथ swaha. उठाओ, Say gussa हाथ उठाओ। swaha. Anger हाथ उठाओ। swaha. Raise your hand. सभी हाथ उठाओ जो गुस्सा छोड़े। Those who are मैं renouncing देखूं, anger, raise your hand. शांति से हाथ उठाओ, जब तक मैं हाथ नहीं छोड़ूं आप नहीं हाथ And don't नीचे put your करो। hand down till मैं Dadi's देखूं hand is हाथ raised. किसने। Don't put your hand down. Keep it raised. Dadi is looking around, seeing whose hand is not up. अच्छा, Okay. अब सच जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। Now those who did not raise their hand, they raise their hand now. Who did not जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो sacrifice, हाथ उठाओ। they raise their hand. Anyone who did not raise his or her hand? एक हाथ उठा रहा. हाँ, सच बोलो। Yes. Who is not raising the hand? You don't want to give up anger? No? He's raising his hand. You don't want to give up anger? He's still raising his hand. You don't want to give up? What? You don't want to give up बच्चों anger? को भी Who is that person? प्यार से बोलो, बेटा शांत में रहो, गुस्सा नहीं Supposing करो, your- डरो नहीं, Your- उनको प्यार से बताओ। If your सिखाओ। child is getting angry or somebody else is also getting angry, tell that person. Speak peacefully. Don't be upset. Don't get angry. Be loving so you can be loving yourself. And if you don't get upset, the other one will also become quiet. तो बच्चे सीखेंगे तो स्कूल में भी बताएंगे कि लड़ना नहीं, शांति से पढ़ना। So if you are able to teach this to your children, then your children will also tell the same thing in their school. They'll tell the other friends, the teacher, that how we should not get angry. तो फिर माँ बाप बच्चों को प्यार से समझाओ, कभी झूठ न बोलना, कभी चोरी आदि न करना, कभी लड़ना नहीं। So also teach your children never to speak lies, never to steal anything, and never to fight with anyone. दूसरा, एक राय है हमारी, बोलो। Should Daddy say something more? Are you ready to आप सब- sacrifice? आप सब यहाँ राजयोग सीखने आए हो, तो इसको रोज अभ्यास करो और
राजयोग का पहला नियम है पवित्र ब्रह्मचर्य में रहना. Also, when we say the soul is pure, so we need purity in our life and purity of thoughts, of words, of actions. This is like a vow which we are taking in our life of purity. Like celibacy, brahmacharya is also a very strong vow of purity. उसके लिए 3 बातें हैं. एक तो आप लोग 2 साल के लिए जो भी भोजन खाओ पकाओ, आज कहा भी तो नो प्याज, नो लहसुन, ना मछली, ना अंडा, ना मांस, ना मधुरा, शुद्ध देवताओं का पवित्र दाल भात खाओ. So for a Raj Yogi, we need to have some disciplines in life. And one of the first disciplines is purity of food. So purity of food means no non-vegetarian diet, and we need to eat vegetarian diet, no meat, no fish, no eggs, no non-vegetarian diet. Because a yogi means who eats only pure food. तो पहला शिव बाबा से वायदा करो कि आज के बाद हम पवित्र शुद्ध भोजन खाएंगे. ये मछली, अंडा, आज शराब, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा नहीं सेवन. So those who say that they will, हाथ the उठाओ. intake will be only pure हाथ food, no उठाओ. meat, no non-veg मैंने food, भाई no हाथ smoking, no उठाओ. drinking. Huh? पक्का हाथ Now who उठाओ. will like to raise their hand to make a हाथ promise? उठाओ. उठ खड़े हो, उठ Oh. खड़े हो. Daddy, पक्का उनको उठ खड़े हो headphone सभी. पड़ा है, headphone. Can you stand up if you think that हाँ, you will? अपनी भाषा में ट्रांसलेट करो. Can you stand up if you think that you can make this promise? दादी वो हेडफोन पड़े हैं, वो टूट ना जाए. If you got headphones, please be careful. Don't break the headphones. दादी अंडा कहते अंडा. अंडा also is part of non-veg. Egg is also part of non-veg. क्या? कहते अंडा खा सकते हैं. नो अंडा, नो मछली, नो प्याज, नो लहसुन. Even onions and garlic is part of non-veg food. Please sit, please sit. Okay. दाल भात, साग सब्जी, शुद्ध भोजन खाना. See, nature is giving us so much food. We can get a lot from nature, Dadi is saying. So, eat प्याज what- लहसुन भी नहीं. actually, onion, garlic is also considered to be part of tamasic food. We will never put onion, garlic in the prasadam which we give to the deities, because that's also part of tamasic food. सुना प्याज लहसुन बिल्कुल. जो देवताओं को दाल भात प्यार से भोग लगाते वो खाओ. So whatever offerings we give to the gods and goddesses, only that we eat. We don't eat onions and garlic also. कईयों की आदत होती कि बिना लहसुन वगैरह के सब्जी नहीं अच्छी लगती. There are many people who put onions and garlic in every vegetable they cook. They must put onions and garlic. तो यहाँ तो कोई प्याज लहसुन आदो कुछ नहीं. फिर यहाँ का भोजन अच्छा But the लगा. food that you ate here, there was तो no हाथ onion, no उठाओ, garlic. भोजन अच्छा Did you लगा. like the food that you ate here? Okay, so no onion, no garlic in the food हाथ here. उठाओ. Did you like it? Those who liked the food, raise your hand. Those who are happy with what they ate. Okay, okay. तो ऐसा Silence, प्रेम से please. शांति शुद्ध भोजन खाना है 2 साल. 2 So Dadi साल. says, okay, it may not be lifelong. Okay, it's up to you lifelong. But at least for 2 years, can you make this promise? माताएं सुना. Mothers?
बच्चों को भी कहो कि यही खाओ। Tell your children also this is pure sattvic food. It is good for the mind, good for your soul, good even for the body. If that बच्चों को भी ये non-veg प्याज food is लहसुन not very मछली good for the अंडा body. शराब कबाब Silence, नहीं please. देना। Tell your children also that no smoking, no drinking, this is not good for the body. अगर घर में भी शराब वराब रखा हो तो नदी किनारे में भले डाल दो। If there's any bottle of alcohol or wine or all that, anything, just put it or throw it away in the sea, in the river. पर इस In the, इस भगवान के प्यार की आत्मा के रथ को नहीं खिलाओ। this is like the chariot or the temple of the god or goddess sitting here. So I'm a soul, a god and a goddess, and this is my chariot, my vehicle, my temple. How can I give impure food to this vehicle? ये माताएं जो सिंगनी सिंगनी पता नहीं क्या करते, बिल्कुल नहीं। बस Sometimes they eat other intoxicants, they smell, they eat different types of intoxicants. Actually, this is not good for the soul and the body. दूसरा बोलूं भाई लोग, Should she tell you Bolo. more? Are you ready to accept? भाइयों को बोलती है। Dadi is telling, especially to the brothers. एक हमारी विनती है या राय है कि यहाँ आप सब राजयोग सीख रहे हो, तो राजयोग सिखाता है मैं भी आत्मा भाई, तुम भी आत्मा भाई, सब आत्मा शुद्ध है। यही So सीखा। here we learn Raj Yoga, and we are told in this Raj Yoga that I'm a soul and I have to see everyone as a soul, because we are all souls and children of one Father. तो इस प्रैक्टिस लिए 2 साल, बोलो 2 साल सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना So if for 2 है। years at least purity of thoughts, in which celibacy is one of the practices in which we are able to, restrain our senses and become soul conscious and control our senses and lead a pure celibate life, because this is good for the soul. And if that is just for 2 years, and then you can decide later on. But coming to God's home, if you make this promise, it will give you so much strength from God that Dadi is assuring you. कहा जाता काम एशु क्रोध एशु ये मनुष्य के दोनों महाशत्रु है। Actually, sex, lust and anger, they are the greatest enemies of the soul. They kill the soul. They make the soul completely, weak. They make the soul completely poor, or it takes away all the wealth of the soul, these 2 vices. ये भी शुभ राय है कि आप लोग अपने धंधे में भी सच्चे का व्यापार करो, दाम फिक्स रखो, तो झूठ सच नहीं बोलना पड़े। And also, as far as possible, avoid speaking lies. Even in business, we don't have to speak lies. And some people speak so much lies. They do, black marketing. They do bribing. So many things which is not good for the society. And therefore, we need to change ourselves in these matters also. We have to give up greed. Even that's a very big vice. इसलिए चोरी ठगी झूठ ये सब राजयोग के लिए पाप कर्म है। So stealing, speaking lies, hurting other souls, giving them sorrow, so many things. With these we commit so many sins in life. And in Raj Yoga we say that these sins are accumulating in life, and because of this we are burdened our lives so much. इसलिए हे हमारे योगी भाई बहने, यहाँ से पक्के सच्चे प्रेम स्वरूप
शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, खुशी में भर के रहो. So now that you are here, you should go back from here as very loving souls, peaceful souls, blissful souls, powerful souls, pure souls. This is what Dadi expects you to become here. तो दादी फिर कहती, 2 साल ऐसी पवित्र शुद्ध प्रेम भरी प्रवृत्ति में रहेंगे, ऐसा ही व्यवहार आज करेंगे, ऐसा पक्का दृढ़ संकल्प करो शिव बाबा से, तो जो संकल्प करे वो उठ खड़े हो. So Dadi is asking those who think that they can make this promise, if they would like to stand up and stand and say, yes, we are making this promise. At least 2 years. उठ खड़े हो, Or at least a उठ खड़े thought. हो. Yes, I'll try. जो ऐसा संकल्प करे वो उठ खड़े हो. मैं देखूं, हाथ हिलाओ. उठ खड़े Daddy हो, wants you हाथ to हिलाओ. wave to Daddy. एक दो को ये देख रहे हैं कैसे Why हमारे are भाई you looking है. at somebody else? You उठते should नहीं है. see yourself उठो. only. Daddy is saying, why are you sitting? Why aren't you standing up? माताएं. She's a great leader, you see. Great leader she is. उठो माताएं, She won't भाई. give in. She won't leave you. सच्चे योगी, Daddy योगी, योगी would like बनो. you to at least try, and for that get up. Huh? Please stand up. At least say to yourself, I will try. And you, those who say they will try, even they can stand up. Okay? Yes? No? You don't बोलो, even want to कभी try? शिव बाबा Those who are लड़ेंगे sitting? नहीं. So say, I will not get angry. Say, I will not get angry. गुस्सा नहीं करेंगे. कोई पाप कर्म नहीं I will करेंगे. not commit any sinful actions. रोज राजयोग का अभ्यास करेंगे. And I will also go to the center every day to study Raj Yoga, to अच्छा. practice Raj Yoga. Om Okay, sit down. Shanti, Om. Please sit. Very good. Some of you were very courageous. Very good. तो 2 साल पक्का शुद्ध अन्न, शुद्ध भोजन, शुद्ध व्यवहार और ब्रह्मचर्य में रहना. ब्रह्मचर्य में रहना दादी, ये पक्का. उसके लिए पहले सेंटर पर रोज जाएंगे ना. पहले सेंटर पर जाएंगे ना, वो पहले संकल्प करेंगे ना. हाँ भले. So for that you will go to the center, because only then you can get strength from there, going regularly, and then you can practice this more and more. दूसरा, रोज सुबह को आश्रम पर सेंटर पर जाके ये राजयोग का अभ्यास करना और डिस्कोर्स जिसको मुरली वो समझना सुनना. So, ऐसा रोज जाना. so after you go back, you must go to the center every day. Just as you eat food for the body, you need food for the soul as well. That will make your soul strong. So morning or evening, whenever you get time, you should go to the center to hear the versions of the Supreme Father, and by hearing those versions, the soul becomes strong. भले सवेरे जाओ या दिन शाम को जाओ, पर सारे दिन में एक टाइम जाना. Maybe you don't get time in the morning, that's okay. You can go in the afternoon or you can go in the evening. But at least once in a day, you should make a point to go to the center for some time. तो ऐसा ऐसा रोज अभ्यास करेंगे और ऐसा ही शुद्ध प्रेम से भोजन बनाएंगे, खाएंगे. ऐसा व्रत पक्का जो करते वे हाथ उठाओ. Again, Daddy wants you to raise your hand. Don't stand up. Those who really feel, yes, they can do it, they'll try. Please raise your hand. उठ खड़े Hi, हो. Daddy, बहुत बार उठे. जरा तकलीफ होंगी, उठ खड़े हो, वादा करो. Daddy is giving you some exercise. You have been sitting too much, no? So some exercise to stand up, to raise your hand. This is good for the body also.
मैं देख रही हूँ बहुत ही There are so बैठ- many at the back who are not standing. Daddy is watching everyone. सोचो सोचो Think over, think over. अपनी पवित्र देवताई जीवन शुद्ध बनाओ। Make your life like a deity. You ये work that. पीछे में उठते ही नहीं है पीछे। Those sitting at the back are not wanting to stand up. They're all sitting. That is seeing you. अच्छा बैठो Okay, okay. बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा बाकी आपस में प्रेम से रहो, मंत्र पक्का हो, ओम शांति, मिलो कहो ओम शांति। So remember this mantra very well. Whomever you meet, say Om Shanti and become peaceful yourself and make others peaceful too. तो आप सबको यहाँ भोजन बहुत अच्छा मिला तो हाथ उठाओ। Everything okay here? You're happy here? Food, accommodation, everything? Okay. पर कोई को पर्सनल अपना कोई भोजन चाहिए तो वो भी उठ करे हो। We are also trying to provide you with South Indian dishes. We have many who cook South Indian dishes, so they will be able to serve you well. रहने का स्थान सबको अच्छा मिला है तो हाथ उठाओ। Accommodation also good? हाँ, सब खुश है। सब खुश है दादी। फिर भी अगर कोई को सैल्वेशन चाहिए तो वहाँ जो रहता है इंचार्ज उनको बोल सकते। We have many, every accommodation area has a caretaker. If there's anyone who needs anything which is needed, so please you can ask him or tell him or anything. Don't hesitate. अच्छा ओम शांति। अभी दादी आपको दादी पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु